नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं जी. In previous classes we started learning Bahuvrihi Samasa and we'll continue these examples we had seen, right? In short we will see. So in this samasa what happens? Anya padasya pradhanata bhavati. Anya padasya arthasya atra pradhanata asti asmin samase. Prathamam padamapi tatra upayogi nasti. Nama tatra pradhanata tasya api nasti. Uttar padasya api nasti. Udharanam kim? Pitambarah. Nama Bhagavan Vishnuhu. यदा वयं वदामः पीताम्बरः आगच्छति पीतमपि नागच्छति वस्त्रमपि नागच्छति पीताम्बरधारी यः वर्तते सः पुरुषविशेषः तत्र आगच्छति इति बहुव्रीहि समासस्य विशेषः. ततः अस्य केचन प्रकाराः सन्ति. इमे प्रकाराः सन्ति. तत्र प्रथमः प्रकारः अस्ति समानाधिकरणः. समानाधिकरणः नाम किं? तत्र प्रथम पूर्वपदं यत् अस्ति उत्तरपदं यद् अस्ति तस्य समानाधिकरणं भवति. अधिकरणं नाम विभक्ति समानविभक्तिकं भवति. यथा पीतम्बरं पीतं च अम्बरं च पीताम्बरम् इति कर्मधारे मध्ये यथा क्रियते अत्रापि तथैव दृश्यते, किन्तु अत्र यस्य येषाम् इत्यादि पदानाम् उपयोगः करणीयः भवति बहुव्रीहि समासे इति कृत्वा अन्यपदस्य प्रधानता. व्यधिकरण बहुव्रीहि मध्ये किं भवति? व्यधिकरणं नाम विभिन्नं व्यधिकरणम् अधिकरणं यस्य अस्ति. यथा चक्रपाणि. चक्रपाणि इत्यत्र किं भवति? चक्रम् इति शब्दः प्रथमा विभक्तौ अस्ति. पाणौ इति सेवन्थ केस मध्ये वर्तते, सप्तमी विभक्ति मध्ये. एकं पदं प्रथमा मध्ये एकं पदम् अपरं पदं सप्तमी मध्ये इति कृत्वा विभक्ति व्यत्यासः अस्ति, विभक्ति भेदः अस्ति इति कृत्वा व्यधिकरण बहुव्रीहि समासः उच्यते. नय बहुव्रीहि मध्ये नय इत्यस्य न इति अर्थः खलु. यथा नय तत्पुरुषः पठितः तथैव अत्रापि, किन्तु अत्र अन्यपदस्य प्रधानता भवति. न धनः न विद्यते धनं यस्य सः अधनः इति उच्यते. If we are using this word for pullinga form, we say adhanah. If we do तत्पुरुषः न धनम अधनम नपुंसकत्वं तत्र भवति. धनम शब्द नपुंसकं. कुत्र? तत्पुरुषे. तत्र नय तत्पुरुषः कुर्मश्चेत् अधनम इति भवति. अत्र तु न धनः अधनः न विद्यते धनः यस्य सः पुरुषः. नय. सः पूर्वपद बहुव्रीहि. सः along with in this meaning सः प्रत्यय सः अव्ययम is been used, right? So सपुत्रः means what? पुत्रेण सह विद्यते वर्तते इति सपुत्रः. Saputra, when we say saputra, it means a father, one who is along with putra. So saputra means father. Okay. अव्ययभाव समासे अपि स इत्यस्य बहुवारं प्रयोगः भवति. युगपत् चक्रेण युगपत् स चक्रम, किन्तु सः भिन्नः. तत्र युगपत् अर्थे अस्ति. भिन्नाः भिन्नाः अर्थाः तत्र पठिताः अस्माभिः. अत्र तु पुत्रेण सह विद्यते इति. उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः. अत्र किं भवति? उपमानं तत्र भवति, सिमिलि तत्र भवति. यथा गजाननः मीन्स व्हाट? गजानन मीन्स one whose face is like the face of Ganesha, face of elephant is called Gajanana. So these are some samasas. Samanadhikarana bahuvrihi we have studied a little bit. We will practice few more examples. You will find prathamanta pada, visheshana padam in prathamanta and visheshya padam also in prathama. Visheshya means the qualifier. Quality and qualifier. Okay, a person who is being described. Pitam ambaram yasya saha. So here pitam ambaram yasya. Pitam is prathamanta, ambaram also is in prathamanta. Ambaram is visheshya padam.
Which kind of, what is the color of that ambaram? Ambaram means vastram, huh? Which kind of vastram? Pitam, yellow cloth. One who wears yellow cloth, that person is named as Pitambarah. If you are describing only cloth, then you will do Karmadhare Samasa. Pitam cha tat ambaram cha pitambaram. This is how you are going to describe, you are going to do Karmadhare. But when you do Bahuvrihi Samasa, what happens? You have to put lingam accordingly. Pullinga Pitambarah, Strilinga Pitambari, Pitambara, नपुंसकलिंगम पीतांबरम, मित्रम इति अपि भवितुम् अर्हति. Okay, now this we had studied. कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः वीराः पुरुषाः यस्मिन् ग्रामे सह ग्रामः वीरपुरुषः ग्रामः, बहुधनं यस्य सह बहुधनः. These things we had seen. Here you were asking regarding prathama. So actually prathamanta will not be used. I said dhanadaha, that can be upapada samasa, but tritiya we can do. In the same meaning we can use tritiya. Dhanam dattam dhanam ena saha datta dhanaha, that we can do. One who has given, the wealth is given by whom, that person also will be called as datta dhanaha. Or one who has received that wealth is also called datta dhanaha. Same. Ena yasmai, that padam only changes. Samasta padam would be same. Okay. Then next we had practiced this also regarding lingam and vachanam. This we will repeat again. Parajitaha ripavaha ena saha parajita ripuhu. Dattam dhanam yasmai saha datta dhanaha. Saha I am adding to it would be datta dhanaha. If I am saying dattam dhanam यस्मै अथवा एभ्यः ते, एभ्यः बहुवचनं क्रियते चेत् दत्तं धनम एभ्यः ते दत्तधनाः. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. निर्गतं भयं यस्मात् सः निर्गत भयः. निर्गतं भयं एभ्यः ते निर्गत भयाः, पंचमी बहुवचनम. लिखितं चित्रं यैः ते, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया बहुव्रीहि, जिन्होंने चित्र बनाया है वो. लिखित चित्राः, लिखितं चित्रम एन सह लिखित चित्रः इति. Okay, in one slide I need to put yat sarvanam. Let me find out that one. But I can share. Sahataute, if you remember this one, you just need to change into yah yau ye, yam yau yan. Let me do it right now. Yah yau ye, ya ye, this you can find out on net, etc. Yat ye yani, yat ye yani, yat ye yani, yani. I think in Napunsakling, after two vibhakti is follow like a pulling, right? Correct. So let me do these two things, then it will be useful for you. Yam ye yaha, it would become yan yum yam. Then yena yabhyam yaihi, yasmai yabhyam ebhyah, yasmat yabhyam ebhyah, yasya yayoho isham, yasmin yayoho esu. Okay, this same is going to be with Napusaklinga.
is in Napunsakling, same thing, right? Here little bit yaya. For Strilingam, if we are using, it would be yaya, yasyai, yasyai, Yasyaha, 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 yasyam. yasyam. Similarly, yabhyam, 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 yayoho, yayoho, yasu, yasam, yabhyah, yabhyah, yabih. Okay, let me know. Yes. Hold on. Yeah, you can. There's one more thing, tasmat, you put in that Pullinga for the Panchami The Vibhakti. Panchami Ekvachana, you have to change. Yes. Okay. Now you take a screen. So actually singular or plural mostly is used in pullinga form. We use yah, yo, ye, yam, yo, yan. So yah, yam, ena, yasmai, yasmat, yasmin. इनके मीनिंग आपको तो हम का तो यू कैन गेट द मीनिंग. यह मीन्स जो, जिसका, है ना, जिसका, जिसने, जिसको, जिसके लिए, जिससे, जिसको, जिसमें, ऐसे हर एक विभक्ति का अर्थ आपको पता है. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस we will practice that. Let me, yeah, here. Okay, पराजिताः ये हो गया था, लिखितम चित्र भी हो गया. अष्टभुजाः यस्याः, सा संबंध, संबंध षष्ठी यस्याः. So अष्टभुजा यस्याः सा अष्टभुजा. षट् आननानि यस्य सः षडाननः. So this is how we have to practice it. Next, Vakram Tundam Yasya Saha Vakratundah. Dhrutani Pushpani Yaya Sa Dhruta Pushpa. It can be Lata, it can be, Nari, whatever. Patita Pushpa, Patitani Pushpani Yasyaha Athva, Yasyaha only. Fifth case we can use. Yasyaha, Shashti also we can use. Patita Pushpa, Lata, Parini Mahila, whatever you want to use. Datta Dakshina means for Datta Dakshina Ebhyah Te Brahmanaha. Vishalaha Margaha Yasyam Nagaryam Sa Nagari Vishala Marga Nagari. All these are going to be adjectives after making Samastapada. Praptam Udakam Yam Sah Gramah Praptodakah Gramah. If you are making Napusaklingam, then we have to say Praptam Udakam Yat Tat Gruham Praptodakam Gruham. Okay, now regarding few rules regarding Strilinga Shabda. Strilinga Padanam Bahuvrihihi Akarantaha Santi Chet. If words are Akaranta, if you are finding Uttara Pada ending with A, then there you need to make little bit changes. What changes? Pullingavad bhavati rupam. Whatever adjective you are using, you have to go with main pratipadika. That is one thing. Second thing, Uttara Pada Vidya Shabda, it is ending with A. When you do Samasta Pada, and if you are going to use Pullinga Shabda, then you have to make Rasva. For example, Adhita Vidya Ena Saha. One who has studied Vidya, right? Adhita Vidya Ena Saha Purushaha Adhita Vidya. Now here we cannot say Adhita Vidya. Adhita is Pratipadikam. That Pratipadikam we need to use along with this Vidya Shabda. And even Vidya Shabda is going to get Rasva. Vidya Shabdaha api tatra Rasvaha bhavishyati. Akarantah sarvepi Shabdaha yadi Pullingarthe upayujjante tada tesham Rasvaha bhavati samastapade. Adhita Vidya ena saha Adhita Vidya. Similarly, Dhruta Mala ena saha Dhruta Malaha. Dhruta Malaha. Dhruta Mala means what?
one who has weared that mala, garland, whatever. Rupavati bharya. Oh, sorry, I didn't understand. One who wears a mala is dhruta mala, malaha. One who has wear that mala, it's called dhrutamala. One who wears it, okay. One has, okay. So how will I know the difference between the akaranta versus akaranta by dhruta mala? Now we are focusing on Visheshana Pada and Visheshya Pada, right? So when we say any Visheshya Pada in Strilinga which is ending with A, like Vidya Shabda, Mala Shabda, Bharya Shabda, that is going to be Rasva. Vidya, Mala, Bharya. This is how it is going to be. And whatever adjective Visheshanam you are using with Vidya Shabda, Mala Shabda, that will be means Adhita, Dhrita. These are the adjectives. Those adjectives also are going to be used in their main form. Pratipadikam. Adhita is Pratipadikam. Then we say Adhitaha in Pullinga, Adhita in Strilinga, Adhitam in Napusaklinga. But main is Adhita, Dhrita. That is main form of Adhita Shabda. Right? So that main form we are going to use. For example, Rupavati. Actually, Rupavati is not Pratipadikam. Rupavat is Pratipadikam. It becomes Rupavan in Pullinga, Rupavati in Strilinga, and Rupavat it remains in Napusaklinga. So Rupavati Bharya Yasya, whatever is the adjective we need to use its main form. Adjective का main form हमें यूज करना है, जैसे कि रूपवत ये प्रातिपदिक है और भार्या शब्द स्त्रीलिंग में है, लेकिन जिसका हम जब अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं और अन्य पद का अर्थ यदि पुल्लिंग में आ रहा है तो जिसकी भार्या रूपवती है वो भार्या भार्यः ऐसा जब कर देंगे, रूपवत भार्यः, उसका अर्थ पुल्लिंग में आ रहा है अभी, रूपवत भार्य, जिसकी भार्या रूपवती है वो पुरुष, तो वहां पुरुष दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रस्व करना पड़ेगा, रूपवत भार्यः। सुंदरी भार्या यस्य सह सुंदर भार्यः, जिनकी भार्या सुंदर है उनको बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुंदर भार्यः। ठीक है ना? ठीक है, अभी थोड़ा सा ये हो गया था आकार के बारे में, भार्या, माला, वगैरह वगैरह, विद्या, इनको हमने शॉर्ट कर दिया। अभी यदि दीर्घ इकारांत शब्द है, दीर्घ उकारांत शब्द है या दीर्घ ऋकारांत शब्द है, वहां क्या व्यवस्था है? वो बोलते हैं कुछ नहीं, विशेषण में आप मेन प्रातिपदिक ही यूज करेंगे यहां भी, लेकिन जो भी दीर्घ शब्द है ना उसके बाद आपको कह प्रत्यय लगा देना है, बस वही सेम है। पूर्णाः नद्यः यस्मिन् देशे सह देशः पूर्ण नदीकः, दैट्स इट, सिंपल, पूर्ण नदीकः, isn't it? So पूर्ण नदीकः means that place where there are various means big rivers, पूर्णाः rivers। प्राप्ता वधूः येन सह, one who has got married, one who got new वधू, that person would be प्राप्त वधूकः। वधू शब्द is always दीर्घ उकारंत, so after दीर्घ उकार what you need to put, you have to put ka pratyay, that's it। So in this the ikaranta shabda in nadyah, in parnaha nadyah, it is so purna, sorry, so that purna is the visheshana pada, right? So that visheshya pada is what you're talking about, the ikaranta, ukaranta, rukaranta shabda. In samasta pada we are not focusing on samasta pada. In vigraha vakya there will be visheshanam, then there will be visheshya padam. If visheshya padam is dirgha ikaranta or dirgha ukaranta or dirgha rikaranta, then what you need to do?
You You need, need to add a ka, correct. ka pratyaya. Rukaranta can be anything. Hmm. Prapta vadhuhu yena sah prapta vadhukah. So vadhu shabda was dirgha. That's how we are putting kah pratyaya along with that. And samasta pada gives different meaning. Prapta vadhukah means a person who has obtain or one who has, क्या, जिसको प्राप्त हुई, जिसको मिली, हाँ वो वाला पुरुष. ठीक है. जीवंती माता यस्य सह जीवन. जीवन इज अ शब्द. जीवत, जिसकी माता जीवित है उसको क्या बोलेंगे? जीवन मातृक. रुकारांत शब्द यहाँ, तो रुकारांत चाहे रस्व हो दीर्घ हो, क प्रत्यय लगना ही लगना है वहां. जीवंती माता यस्य सह जीवन मातृक. सो पत्नी शब्द इज दीर्घ उकारांत. हाँ, दीर्घ ईकार. Ikarant. तो सुंदरी पत्नी यस्य सह सुंदर पत्नी कह. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग ओनली दीर्घ शब्द. यू हैव टू रिमेंबर दैट मेन शब्द, मेन विशेषण, विशेष्य पदम, एंड यू हैव टू पुट क प्रत्यय. दैट्स इट. एम द्वितीयः नियमः आसीत्. तृतीयः नियमः, यदि रस्वः भवति चेत्, रस्व इकारान्तः, रस्व उकारान्तः, रस्व उकारान्त इकारान्त, तदा किं कर्तव्यं? किं न, किमपि न, केवलं विशेषण मध्ये फोकस कर्तव्य, तावदेव. तीक्ष्ण इत्यस्य मेन प्रातिपदिकं तीक्ष्ण इति अस्ति. तीक्ष्ण बुद्धिः, तीक्ष्ण श्रुत कीर्तिः, दत्तधेनुः, पतितरज्जुः. आपको वह विशेषण के ऊपर फोकस करना है रस्व शब्दों के साथ. दैट्स इट. तीक्ष्णा बुद्धि यस्य सह तीक्ष्ण बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत शार्प है. श्रुता कीर्ति. It's like Shamyatam. Like instead of Tikshna, if we use Medhavi Buddhi, then मेधावी, actually मेधावी means one who has sharp बुद्धि. So हाँ. वो अलग ही शब्द है ना. तो मेधावी बुद्धि का विशेषण नहीं हो सकता, किसी पुरुष का विशेषण हो सकता है. Okay. Yeah, got it. ये बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है. हाँ, हाँ. एक स्वतंत्र नाउन बन जाता है, जिसकी मेधा अस्य अस्ति इति मेधावी, ऐसा बनता है. Yeah, got it. श्रुता कीर्ति यस्य सह, जिसकी कीर्ति हमने सुनी है ना, तो उसका नाम हो जाएगा श्रुत कीर्ति ही. ये पुरुष का नाम है. हाँ, श्रुत कीर्ति ही. जब स्त्री का I'm नाम, sorry, Avinash, I'm little getting confused. So Tikshna Buddhihi Yasya Saha. So who has a Tikshna Buddhi? Is that what that Vigraha Pada is saying? करेक्ट. समस्त पदम इज तीक्ष्ण बुद्धि, विग्रह इज तीक्ष्णा बुद्धि यस्य सह. मीनिंग इज वन हुज इंटेलेक्ट इज वेरी शार्प, that person. And one Shruta Kirtihi Yasya Saha. So that means one who has lot of fame. Correct. One whose kirti has been heard by various people or other peoples. That person, one who is famous. That is the meaning actually. दत्ता धेनु यस्मै सह दत्त धेनु. धेनु शब्द इज रस्व उकारांत, so we can say दत्ता धेनु दत्त धेनु. पतिता रज्जु यस्मात् सह पतित रज्जुः इति. रज्जुः विसर्ग इज मिसिंग देयर. पतिता रज्जु यस्मात् सह पतित रज्जु. नाउ यू कैन मेक अधित विद्यः, अधित विद्या, अधित विद्यम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, whatever you want to make, you can make it, right? अधित विद्या, अधिता विद्या येन सह अधित विद्यः, अधिता विद्या यया सा अधित विद्या, अधिता विद्या येन तत् मित्रम अधित विद्यम मित्रम. Even in नपुंसकलिंग it can be used. Okay, so we'll practice this also after some time.
Next, here abhyas padani लिखत, समस्त padam लिखत, समस्त समास padam you have to write. Lakshmi shabda, do you find rasva, do you find akaranta word? If there is a dirgha ikaranta, then what we need to do? That you have to do. So the first one will be Nashta Lakshmi Kaha. Nashta Lakshmi kaha. Samachar. Next. दत्त दक्षिण दत्ता दक्षिणः. दत्ता दक्षिणा यस्मै सः पुरुषः दत्त दक्षिणः. नेक्स्ट. महाविद्यः महती विद्या यस्य सः महाविद्यः. ओके. नेक्स्ट. बहव्यः पत्न्यः यस्य सः. बहुपत्नीकः. हाँ, बहुपत्नीकः. अभ्यस्ताः कलाः येन सः अभ्यस्ताः कलौ Not right. Abhyasta is Visheshana. Main Pratipadikam is Abhyasta. Abhyastaha kalaha ena saha abhyasta kadaha. Abhyasta कलह. Sundari akritihi yasya saha. सुंदरी आकृतिः. सुंदरी, सुंदरी का मेन प्रातिपदिक क्या है? सुंदर सुंदर आकृतिकः. आकृतिकः होगा क्या? सुंदर आकृति. नो, सुंदर आकृति. तो दीर्घ नहीं है. सुंदराकृति ही संधि हो जाएगी. सुंदराकृति. भग्ना आशा यस्य सः भग्नाशः. 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 Good. भग्नाशः. Now we have to do samasa vigraha. Let me change into samasta samasa. You can practice. जितः. Okay. सेनः यस्य सः. What is senaha means? जितः सेना यस्य सः. Visheshanam also you have to go with, Visheshya padam. Sena is Strilinga shabda. Visheshan also will be similar, na? तो क्या बनेगा? सेना. सैन्य. जितना. सेना. सेना. यस्याः. येन सह. ना, यस जिसकी सेना, मतलब कर सकते हैं, न करने के लिए वहां कुछ है नहीं, लेकिन जिसने सेना को जीता है, ऐसा पुरुष को यदि हमें हाईलाइट करना है तो जीता सेना एन सह जित सेन है ना. नेक्स्ट. महान शब्द. महती मति ही यस्य सह महामतिः. नेक्स्ट. दीर्घनासिकः. Are you making fun of me now? यस्य. It is दीर्घा. and this kind of नासिका यस्य यसः. these words I have used in Pullinga. You can even change into Strilinga also. Dirgha nasika yasyaha sa dirgha nasika. दीर्घा नासिका. Dirgha nasika it would be. Dirgha is Visheshanam you have to put in its प्रातिपदिकम्. Right? Dirgha nasika yasyaha sa
Dirghanasika, that would be strilinga, but I have put in pullinga form. Dirghanasika means dirghanasika yasya saha dirghanasikah. Here Jata duhrutrukah. he should be there, no? Jata duhitrukah. दुहितृकः Means what? Now this word is Rukaranta word. If you decline Rukaranta word, it would be Duhita. जाता दुहिता Duhita. Jata Duhita Duhita. Yasya Sah Saha. Jata Duhita. जाता दुहि- मतलब क्या होगा इसका? जिसको अभी अभी पुत्री प्राप्त हुई है, जिस व्यक्ति को अभी अभी पुत्री प्राप्त हुई है, कन्या प्राप्त हुई है, जाता तात दुहितृकः इति. नेक्स्ट Arjita Shrikah. अर्जितः श्रीकः यस्य सः आप पुल्लिंग में नहीं मिलता ना, श्री मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, तो अर्जिता अर्जितः श्री- श्रीकः श्री यस्य- श्रीका यस्या सः येन यस्य येन सः सह जिसने श्री प्राप्त की है, जिसने धन प्राप्त की. येन येन तृतीय अर्जित अर्जिता श्री ही एन सह अर्जित श्रीकः. महाभाग महाभाग्यः महान महत् भाग्यम. महत् भाग्यम भाग्यम इज यस्य सः महाभाग्यः. तो महाभाग्य पुल्लिंग में चलेगा. अभी भाग्य शब्द वस्तुतः नपुंसकलिंग में रहता है, लेकिन वहां समस्त पद करेंगे तो पुल्लिंग में आने लगेगा. ओके, नौ वेदीकरण अग्रिमः प्रकारः अस्ति. किंचित् इंट्रोडक्शन ददामि. पञ्चनिमेषाः एव अवशिष्टाः. व्यधिकरणमध्ये किं भवति? तत्र विशेषणं प्रथमान्तं, विशेष्यपदं कदाचित् सप्तमी विभक्तिमध्ये भवति. यथा खड्गः पानौ यस्य सः. अत्र अस्मिन् समासे किं भवति? सामान्यतः अवयववाचकं भवति. कस्मिन् अवयव किम् अस्ति, तत्र अवयवः, तत्र अवयवानां निर्देशः कदाचित् भवति. खड्गः पाणौ, पाणौ हस्ते यस्य सः खड्गपाणिः अथवा खड्गहस्तः. बोथ वे कैन मेक. खड्गः हस्ते यस्य सः खड्गहस्तः, खड्गः पाणौ यस्य सः खड्गपाणिः. नेक्स्ट. Avinash, I mean, like you used one example like Chakrapanihi before, right? व्यधिकरण. But that is not Bahuvrihi Samasa at that time. It was? No, it is बहुव्रीहि. चक्रम पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः. चक्रपाणिः is the word, right? दंडः हस्ते यस्य सः दंडहस्तः. परशु हस्ते यस्य सः परशुहस्तः. Parashvahastah. परशुराम का वर्णन है. चंद्रशेखरः मीन्स व्हाट? चंद्रः शेखरे Yes, yeah. सः यस्य सः चंद्रशेखर. Chandrashekharah. पाणिः धनुः Panau. पाणौ. Pane. Pane. पाणौ इकारांत शब्द ना. पाणौ यस्य Okay. धनुष्पाणिः अथवा धनुः हस्ते यस्य सः धनुरस्तः. धनुरस्तः. क्वचित् तत्र अपवादाः अपि भवन्ति. नाम खड्गः प्रथमा, तत्र विशेषणं पदं प्रथमा विभक्तौ इति मया स्थापितम्. अनन्तरं पाणौ इति सप्तम्यन्तम् आसीत्. कदाचित् तत्र व्यत्यासः भवति. भाले इति शब्द पूर्वदा. भाले
नेत्रः यस्य सः भाल नेत्रः, ऑर्डर चेंज हो सकती है कदाचित, और रेयर एग्जांपल्स है उसके भी। भाले नेत्रः यस्य सः भाल नेत्रः, भाललोचनः भाले लोचनः यस्य सः भाललोचनः। What does bhale mean? ललाटे, Lalate. वह। राइट, नेक्स्ट, here you have to practice. So, if I have to make a sentence with bhala netraha, right? So I can say bhala netraha. भाले नेत्रम, If I have to make a sentence with that samasa pada, samasta pada. मामी, Bhala netraha kailase bhala netraha parvati patihi. Can I say that? you can say भाले नेत्रः कैलासे वसति, that's it, right? Next, we'll practice. मोदकः मोदक मोदकः हस्ते यस्य सः। मोदकः हस्तः, गणेशः, कंठः, विषः Visaha कण्ठे kanthe. विषम कंठे, विषम कण्ठ। कंठे यस्य सः विषकण्ठः, नीलम नीलकण्ठः, अनदर, गदापाणिः, गदा पाणौ यस्य पाणौ यस्य यस्य सः हाँ, गदापाणौ यस्य सः गदापाणिः, चापहस्तः, चापहस्तौ यस्य सः Chapaha hastaha yasya saha. सप्तमी, राइट? Haste. Yeah, correct. शंखपाणि, चापहस्त, सॉरी चापहस्त मीन्स व्हाट? धनुः, चापः मीन्स धनुः, धनुः धनुष्यबाण जिसके हाथ में है, चाप जिसके हाथ में, Rama. शंखम, No, any. शंखः It can be anybody हाँ who हाँ, has done. जिसके हाथ में, पाणौ यस्य शंख बाण। कॉन्टेक्स्ट, इसलिए हमें